सुबह हो गई और मैं उठ चुका हूँ। हॉगवार्ट्स में मेरा पहला दिन। और यहाँ पर 3 बेड्स है, तो शायद और कोई रहता है मेरे साथ। ऑलराइट, तो फाइंड योर कॉमन रूम। तो कॉमन रूम में जाना है अभी। किसी की आवाज़ तो आ रही है। वैसे कॉमन रूम है किधर? उधर है। ओह भाई, कैसे जा रहा है? ऑलराइट, तो अभी तक तो मैंने 4 स्पेल सीख चुके हैं। ऑलराइट, और 2 क्या थे? लूमोस और प्रोटेगो। तो अभी चलते हैं कॉमन रूम में। वैसे कॉमन रूम शायद ऊपर है। और उसके बाद शायद यहाँ पर जो भी प्रोफेसर्स है उन लोगों के साथ मुलाकात भी करना है। कॉमन रूम शायद नीचे है। तो नीचे चलते हैं। और ये क्या है? ये तो मेरा ही रूम है। उधर है। अरे नीचे है कि ऊपर है भाई? ये तो किसी और का रूम में आ चुका हूँ मैं। नहीं, तो ऊपर चलते हैं। और राइट, तो भाग कर चलते हैं। भाई वैसे ये जो जगह है बहुत ही बड़ी जगह है, तो आराम से एक्सप्लोर करेंगे। और ये मूर्ति हिला अभी। वैसे यहाँ पर जो भी मूर्ति या फिर पिक्चर्स है हिलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। और कॉमन रूम शायद नीचे है अभी भी। ओह, चेस्ट है। लेवल 1 तो है मेरा। शायद कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। हेलो, यहाँ पर भी कुछ है, तो रिवेलियो ट्राई करते हैं। रिवेलियो, ये देखो भाई, कुछ तो है लेकिन एक्सेस नहीं है मेरा अभी। और उधर भी कुछ है, उधर भी चेस्ट है। ऑलराइट, तो शायद पैसे मिलेंगे। नहीं, इसके ऊपर कुछ रखना है। ऑलराइट, तो अभी कुछ लोगों के साथ मिलना है। क्रेसिडे, गैरेथ, नेली, सब लोगों के साथ मुलाकात करना है। I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Non-verbally मतलब बिना कुछ बोले मैजिक कर रही है। Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Hello, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? ये पूछ रही है कि मैं उसका आश्रित हूँ कि नहीं, मतलब उन्होंने मुझे पाला है कि नहीं। नहीं, मैं उसके साथ पढ़ाई किया हूँ। नॉट एट ऑल। No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. I am sure you will get it, but if you just need a bit more practice, your casting needs work. I am sure you will get it. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. How hard is it to cast non-verbal spells? Can most students cast non-verbally? How Is it hard? really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward.
Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. तो इन्होंने एक बार नॉन वर्बल स्पेल यूज किया और Do most गलत हो students गया know तो how to cast प्रोफेसर के मुंह में कुछ Not गिर at गया। all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. तो यहाँ पर नॉन वर्बल कास्ट नहीं सिखाए जाते until 6th year. All right, I wish you luck. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. तो अभी गेरेथ के साथ मिलना है। वैसे ऊपर क्या कर रही भाई? Revelio. ओह, इधर कुछ है क्या? इसमें कुछ लगाना है, तब जाकर शायद खोलेगा। ऑलराइट। She gets bolder every year. तो इधर बहुत सारे चीज़ें हैं, तो एक एक करके देखते हैं। इधर क्या है? ओह, मैं सेब खा रहा हूँ। राइट। Shame you weren't born with wings. और ये ऊपर क्या कर रही है भाई? नीचे तो आजा। अरे भाई नीचे आजा, बातें करनी है। ऊपर कैसे जाओ भाई? Who does Nelly think she is? If I get caught, I shan't defend you. नहीं जा पा रहा हूँ। Every year. शायद बाद में ये नीचे आएगी तब जाकर बातें करेंगे। राइट। Nelly, does please Nelly get think she down. is? ये देखो भाई, Professor could arrive any moment. इसको बुलाओ कैसे? कोई She gets है bolder ऑप्शन? every year. नहीं। तो इधर क्या है? ग्रामाफोन। इसको प्ले करते हैं। हाँ, कुछ बाज रहा है टूंग टांग करके। I would really like someone to try it. गैरेथ विज़ली। भाई ऐसा लग रहा है ना Sure you रॉन don't want to विज़ली की try तरह। Brewed it myself. शायद यही मेरा दोस्त होगा आगे जाकर। Hello. हेलो। You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? अरे वो तो जॉर्ज था, yes. मर गया भाई। A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. अच्छा, ये प्रोफेसर विज़ली का नेफ्यू है। That must be nice. That must be awkward. Then you can do whatever you want. Yes. इसको You यही must be able to बताते get हैं। away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. ये बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि वो इसके पीछे हमेशा नज़र रखती है। Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with. अरे over the मेरा summer. अभी तो I'm ब्रेकफास्ट नहीं almost हुआ अभी there. तक। Based on some reactions, it may need a bit more work. Do you have a knack for potion too? मतलब इसके पीछे पागल है क्या? Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. So ये जो भाई साहब है पोषण के पीछे पागल है और पोषण के मदद से बटर बियर बना के पी रहा था। तो अभी नीली के साथ मिलना है और ये भाई साहब बैठ के पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पर क्या? ओह, मैं चाय पी रहा हूँ। नाइस। और कुछ है? Who does Nelly think she is? Revelio. नहीं। तो अभी नीली के साथ मिलते हैं और ये ऊपर क्या कर रही है भाई? नीचे तो कूद जा, बातें करनी है। ओह, हेलो। Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me.
I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. टावर के ऊपर चढ़ गई थी. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? और ड्रैगन के बारे में पूछ रही है. It was nothing I couldn't handle. It was terrifying. It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. ड्रैगन अटैक किया तो बड़ी न्यूज़ बन गई इधर. What are people saying about my travels here? What exactly यही are पूछते the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Not afraid of height, are you? I विचार take से it नहीं you're not डरती afraid है. of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. All right, bye. New Gryffindor. And फिर से ऊपर चढ़ रही है. Weasley's waiting for you outside भाई the ये common room. क्या है? कभी भी किधर चढ़ जाती है, डर नहीं लगती. तो मुझे गैरेथ के साथ बातें करके अच्छा लगा. अब मुझे लगता है गैरेथ के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए. तो अभी जाना है मीट प्रोफेसर विजली आउटसाइड द कॉमन रूम. और राइट, तो इधर देख लेते एक बार. इधर कुछ लगा सकते क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है. Revelio. तो बाद में देखेंगे शायद. तो और कुछ है क्या इधर, देख लेते हैं. I think it's for the best that Kagawa takes flying seriously. Far too easy for first years to injure themselves. गाइस इस गेम में म्यूजिक बहुत ही अच्छा है भाई. और भाई अंदर क्या ही इन्होंने डिटेल्स किया है. सब कुछ एकदम डिटेल्स में है. ओके, तो विजली के साथ मुलाकात करते हैं. प्रोफेसर विजली बाहर है. Good morning. I trust Hello. you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. 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 Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. किताब दे रही है भाई, पहली किताब एज लिखा है. और अंदर से इतने ज्ञान के भंडार निकल रहे हैं भाई. ओह माय गॉड. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. तो सब कुछ इसी से ही मिलेगा, मतलब गेम के अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी करना है, Thank you, सब Professor. कुछ इसी से ही मिलेगा What do you mean हमें. it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test.
और राइट, तो इसके साथ जाना है और ये हमें बताएगी कि कैसे सब कुछ करना है यहाँ पर। तो फॉलो प्रोफेसर विजली। The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I... Revelio. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. तो हर जगह हमें अलर्ट रहना चाहिए और सब कुछ हमें सीखते रहना चाहिए, यही बता रही है ये। Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Borufio. बोरूफियो। Simply cast Revelio. अच्छा, स्पेल रेवेलियो। फील्ड गाइड पेज। और एक कैसी पेंटिंग है? पोर्ट्रेट ऑफ बोरूफियो। द पोर्ट्रेट डिस्प्लेड द विजर्ड बोरूफियो फेम एलिक्सर। अच्छा, तो मतलब है कोई एफ के जगह एस बोल दिया था, तो इसीलिए उसके ऊपर बफेलो गिर गया। और भाई गलत नहीं बोलना इधर, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। चैलेंज अनलॉक्ड। कलेक्ट फील्ड गाइड पेजेस इन हॉगवर्ट्स। यू हैव जस्ट अनलॉक्ड ए फील्ड गाइड चैलेंजेस। कलेक्ट फील्ड गाइड पेजेस इन हॉगवर्ट्स। ऑलराइट, तो मैप के अंदर जाना है। तो देखते हैं। दिस इज योर विजार्डिंग लेवल XP अर्न फ्रॉम चैलेंजेस इंक्रीजेस योर लेवल्स एंड पावर। ओके, तो XP भी मिलेगा और चैलेंजेस भी मिलेगी। योर फील्ड गाइड ट्रैक्स योर करंट चैलेंजेस प्रोग्रेस। सिलेक्ट द चैलेंजेस मेन्यू टू कंटिन्यू। ऑलराइट, इसके अंदर चैलेंजेस है, देखते हैं। बहुत सारे हैं भाई, ये देखो कॉम्बाट, क्विस्ट, एक्सप्लोरेशन, फील्ड गाइड पेजेस और क्या है भाई साहब। तो मुझे अभी एक ही पेज मिला, तो अभी भी और एक पेज ढूंढना है। और ईच चैलेंजेस हैज टायर स्पेशल रिवॉर्ड्स अनलॉक एट ईच टायर यू कंप्लीट फ्रॉम अपीयरेंस टू क्रिटिकल अपग्रेड्स। Reward must have been claimed from the challenges menu. Come back often to collect rewards you have unlocked. All right, तो यहाँ पर बहुत सारे पेजेस कलेक्ट करते रहना चाहिए और उसके बाद जैसे जैसे करेंगे तो अनलॉक होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है फील्ड गाइड, जो पेजेस हमें एक मिला, अभी भी और एक कलेक्ट करना है, तब जाकर ये अनलॉक होगा। और देखते हैं आगे, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है इधर भाई। कितने कुछ है, क्विस्ट है अभी। क्या क्विस्ट है? अभी तो कुछ खोला नहीं। अभी फॉलो प्रोफेसर विजली। तो प्रोफेसर विजली अभी भी कुछ गाइड करेगी, तो देखते हैं। और ये क्या चुड़ैल उड़ रही भाई? Keep your eyes open for more opportunities. कैसे जा रही है चुड़ैल? और ये कौन है? इसको देखो भाई। Revelio. और गाइस ये देखो भाई, अभी शायद एक ही स्पेल हम सीख पाए हैं। इसमें क्या है? लूमोस। और कितने सारे हैं भाई, तो सब कुछ हमें सीखना है एक एक करके। वैसे हम 4 स्पेल सीख चुके हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्पेल है उनमें से एक ही सीख पाए हैं, जो लूमोस। और यहाँ पर लेवल 1 चाहिए। बिल्ली है। इसको मैं टच कर पा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई, क्या ही डिटेल्स ने इन लोगों ने बनाया है भाई, तारीफ तो करनी ही पड़ेगी भाई। और ये खोल सकता हूँ। मुझे विगनवेल पोशन मिली, बढ़िया। तो इसलिए प्रोफेसर विजली बताई थी कि सब कुछ चेक करते रहना चाहिए।
Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Discover a flue flames fast travel point. अच्छा, और ये हमारा मैप है. Hogwarts is divided into two main axes. The left side of the map is where students and professors live and included the house common rooms and the craft hall. Alright, select the south wing region. In this view we can see the flue flames available in the region. Green flue flames represent flames you have discovered including your own house common room, and gray flue flames reveal that located undiscovered flames. अच्छा, मतलब ग्रीन फ्लेम का मतलब है हम डिस्कवर कर चुके हैं और जो ग्रे है अभी भी नहीं करे. The right side of the map is where you will find academic points of interest including the astronomy tower, library and greenhouse. अच्छा, तो यहाँ पर चलते हैं. लाइब्रेरी एक्सेस. लाइब्रेरी एनेक्स. प्रोफेसर विजली हैज अनलॉक्ड द सेंट्रल हॉल. अच्छा, इन्होंने पहले से ही मेरे लिए अनलॉक कर दिए. सेंट्रल हॉल में जाने के लिए फास्ट ट्रैवल के लिए जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा तो चला जाऊँगा शायद. ऑलराइट, वेरी गुड. मतलब ये जो एरिया है बहुत ही बड़ी जगह है भाई, तो ऐसे हम पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है. These stairs lead directly to Central Hall. मतलब ब्लू फ्लेम यूज करके हम फटाक से जा सकते हैं. शॉर्टकट है. अगर पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. How nice to see you, my young friend. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Have you ever noticed the potions of the ghosts? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about Charm class? What exactly Defense Against the Dark what Hogsmeade? Hogsmeade तो वही जगह ना जिसमें Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. तो चार्म क्लास में हम स्पेल, चार्म ये सब सीख सकते हैं और प्रोफेसर रेनन हमें सिखाएंगे. So now what about Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. मतलब कोई अगर ऑरर बनना चाहते हैं, मतलब कोई पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्स, तो उसके लिए ये जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट क्लास में सिखाएंगे कैसे एविल के साथ फाइट करना है और प्रोफेसर हैकेट सिखाएंगे. तो व्हाट अबाउट हॉग्समीड? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all Yes, the यहाँ पर हम supplies you शॉपिंग कर require सकते in हैं. Hogsmeade. तो You will also, मेरे I ऊपर जब imagine, हमला हुआ enjoy तो many मेरी a जो butterbeer सारी there with friends in चीज़ें due खो गई course. है, तो मुझे फिर से शॉपिंग करना है और वहाँ पर हमें बटर बियर मिलेगी जो हम पी सकते हैं दोस्तों Thank के you, साथ. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier,
I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. तो मैडम जानना चाहती है कि वहाँ पर ड्रैगन के साथ क्या हुआ था और क्या क्या हुआ था। तो देयर इज इन फैक्ट क्या बताऊँ, आई एम एफ्रेड देयर इजंट। तो इसको कुछ नहीं बताएंगे, आई एम एफ्रेड देयर इजंट। I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. सो हमें 2 क्लासेस अब अटेंड करना है, उसके बाद प्रोफेसर विजली के साथ हॉग्समीड में जाना है जहाँ पर शॉपिंग करना है। अब प्रोफेसर फिग कुछ बताएंगे जो फील्ड गाइड मैप के बारे में, तो इसके साथ बातें करते हैं। It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? तो इन्होंने जानना चाहते हैं कि मैं ठीक से उनको एवर्ट किया कि नहीं, जो प्रोफेसर विजली जानना चाहते थे कि हमने ट्रैवल मतलब जो कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, तो हम ठीक से एवर्ट किया कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। But I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. ओह, मतलब प्रोफेसर विजली हेडमास्टर को सब कुछ बता सकती है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। The ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. New quest available. You can track available quest from the map. Alright, open map. तो मैप में हमें 2 क्वेस्ट मिली है। एक है डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट क्लास। This represents main quest. Completing main quest will further the story, unlock new features and grant XP. Some quests are locked by spells and or level requirements. In this case, you will need to be required level and for have the required spell to activate the quest. New spell can be earned by completing professor assignment or quest. अच्छा,
तो 2 क्विस्ट हमें मिली है, एक है चार्म क्लास और एक डार्क आर्ट क्लास। तो हम जाएंगे चार्म क्लास के अंदर और ये मेन क्विस्ट है। डार्क आर्ट में लेवियोसो सीखेंगे और इसमें हम एक्यो। तो फिलहाल 2 क्लास अटेंड करना है, तो पहले चलते हैं डार्क क्लास में। The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. तो फिलहाल 2 क्लासेस अटेंड करना है। 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो ये जो कंपास के मदद से हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं किधर से जाएंगे हम। ऑलराइट, तो इधर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये क्या कर रही है इधर? ओके, तो इसके साथ बातें करते हैं। Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. तो यहाँ पर एक फ्रेम है जो अभी एम्प्टी है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. तो देखते हैं अब मैं ही ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं पेंटिंग में कुछ नहीं है, तो अगर मैं कुछ मंत्रों करूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो लूमोस करते हैं। Lumos. That spot must be a clue. तो यहाँ पर कुछ बटरफ्लाई है और एक बटरफ्लाई मिसिंग है। अच्छा, तो इधर है शायद कुछ। Let's get you back to ये your देखो frame, भाई, Mission बटरफ्लाई इधर उड़ रही है, तो इसको ले जाकर उधर रखना है। तो ये मिसिंग थी, तो इसको इधर रख देते हैं। कैसे रखूँ? अरे चला जा उधर भाई, कुछ करना पड़ेगा। इसको फेंकूँ कैसे उधर? अच्छा, ये हो गया। तो अभी ठीक है सब कुछ। ओके, और इधर मेरे को कुछ मिला, तो मुझे और एक पेज मिल चुका है। और राइट, तो देखते हैं अभी किताब के अंदर क्या मिला मेरे को। शायद पहले एक मिला था, अभी 2 हो गए हैं। ये देखो खुल चुका है। ओके, यहाँ पर मैं अनलॉक कर सकता हूँ। ओह, और अभी भी 8 चाहिए। इधर कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए 8 चाहिए अभी पेजेस। ऑलराइट, और किताब के अंदर बहुत कुछ अनलॉक हो चुके हैं अभी। जैसे लेवल अभी 1 है, क्विस्ट तो कर चुके हैं हम। इन्वेंट्री में क्या है? इन्वेंट्री में कुछ नहीं है अभी।
शायद शॉपिंग करनी पड़ेगी। ऑलराइट ऑलराइट, तो अभी चलते हैं उसके साथ बातें करते हैं। तो उसको बोलते हैं कि उसकी जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व कर दिया मैंने। Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? मैं नहीं बताऊंगा कैसे किया। सो आई फॉलोड द क्लूज। तो बता ही देते हैं और क्या, वैसे उसको I क्या found the पता चलेगा। location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. ऑलराइट, कुछ अनलॉक हुआ और मेरा लेवल बढ़ चुका है, 2 हो गया अभी। तो देखते क्या मिला मेरे को। इधर क्या है, तो ये तो मेरे को मिल चुका है, इसमें तो कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो अभी चलते हैं क्लास में, लेट हो रहा हूँ। सो ये जो डायरेक्शन किधर चली गई। ऑलराइट, तो आप फिर से मेरे खोल कर सेटिंग करना पड़ेगा। कुछ हुआ नहीं, तो क्वेस्ट के अंदर चार्म क्लास के लिए मैं जाऊंगा अभी। अब सही है, शायद हो गया। तो उसमें मैं सीखूंगा आक्यू। ऑलराइट, हाँ अभी डायरेक्शन बन गई है, तो अब हम आराम से जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं, शायद ऊपर है। इधर है शायद। ऑलराइट, ओह ये तो मैं बाहर आ चुका हूँ। ओह ये मुझे को आसमान दिख रहा है। वो कोई झाड़ू लेकर उड़ गया। ये देखो भाई, मुझे भी झाड़ू लेकर उड़ना है भाई। कब उड़ेंगे हम पता नहीं। ऑलराइट, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट टावर। भाई जगह देख रहे हो, कितनी बड़ी जगह है, खो जाएंगे ऐसा लग रहा है। ओके, तो ऊपर जाना है। ऑलराइट गाइस, तो आ चुका हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। टीचर्स किधर है? हेलो टीचर, ये टीचर है? नहीं, ये तो स्टूडेंट है। हेलो, आई एम नेटी। इसका नाम नेटी है। Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? भाई चार्म क्लास है, इसीलिए टीचर भी बहुत ही चार्मिंग है। I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all.
By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you ओहो, even लड़की remember शर्मा how to गई। perform a basic summoning charm? भाई सिखाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा इसकी चार्म कैसे करना है? It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. तब खींचकर मेरे हाथ में लानी है। ऑलराइट, तो हम सीख रहे हैं आकियो। ओह, लगता हो गया। Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. अच्छा, तो इसके साथ बाहर जाना है, तो बाहर शायद इन्होंने प्रैक्टिस कराएंगे, तो चलते हैं। I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? भाई स्पेल के मदद से क्या ही बना रहा है भाई। लगता है कुछ खेल होगा इधर। तो शायद हमें प्रैक्टिस करना है आकियो। तो ये जो बॉल है इसको खींचकर इधर लानी है। ऑलराइट, तो ट्राई करते हैं। The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Excellent control there. लगता है हम सीख चुके हैं। यस, फिर से कर दे भाई। ऐसे खींचना है। अच्छा, तो इसको भी खींच देते हैं। बढ़िया। Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. ओह, अब कंपटीशन होगी किसी के साथ, नर्सरी के साथ। ऑलराइट, तो पॉइंट कलेक्ट करना है, सही से करना पड़ेगा अब। पहले ये करेगी। ओह, तो 30 पॉइंट मिले उसको, तो हमें भी करना है अब। तो करते हैं। ओह वो रुक जा। अरे अरे, गिरना नहीं। अरे भाई, अभी तो 50 पॉइंट मिलने वाले थे भाई। लगता है हार जाएंगे, तो अब करते हैं सही से। तो मैं कुछ ज़्यादा ही खींच दिया था, आराम से करते हैं। ओहो, लगता है हार जाएंगे अगर इसका गेंद नहीं गिरी तो। गिर जा। अरे नहीं, तो मैं तो ऐसे ही हार गया। तो इसको ट्राई करते हैं।
60 पॉइंट मिले हैं टोटल। Nicely done. Let us make this a bit more interesting, shall we? ओह, फिर से और एक कंपटीशन होगी। इस बार जीतेंगे हम। तो इस बार ऑब्स्टैकल है, तो इस बार और भी मुश्किल है। I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा कर रही है भाई, तो मुझे भी ट्राई करना है। इस बार मैंने सही किया, एकदम बढ़िया किया। Here we go. हे, इसकी गेंद तो इस बार अटक गई। अरे नहीं, ये क्या हुआ? ठीक है, मुझे 50 पॉइंट मिलने चाहिए अब, नहीं तो फिर से हारेंगे क्या? तो फिर से ट्राई करते हैं सही से। आजा 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 आजा, रुक जा रुक जा रुक जा। ओ भाई, Watch this. That is how it's done. ऑलराइट, तो फिर से हमें और एक 50 पॉइंट लेने हैं। आजा 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 आजा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ऑलराइट, तो शायद जीत चुके हैं हम। ये अब आया ना मजा। Very good. और एक both of कंपटीशन you. होगी Well क्या? done. नहीं लगता, नहीं। Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. तो ये उगांडा से आई है, मतलब, और Is उगाडो Wagadu much bigger than कैसा Hogwarts? है? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. ओगाडो हॉगवार्ट्स से भी बड़ा है भाई। Is Wagadu a castle like Hogwarts? मतलब It's बड़ा स्कूल से आई है। Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. भाई ओगाडो में कोई छड़ी यूज नहीं करता। Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time.
ऑलराइट, तो रैनॉन के साथ बात करना है। प्रोफेसर रैनॉन। If you would. Well, You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. तो हम एक क्विज कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलराइट, सो गाइज अब हमें सेकेंड क्लास के लिए जाना है, जो कि है डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट। एंड समंथा क्या बोल रही है? भाई यही वो है ना जो शर्मा रही थी। to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. तो समंथा जो है भाई सीखना चाहती है स्पेल वगैरह, उसको प्रोफेसर रैनॉन बहुत ही चैलेंजिंग लगा। ऐसे एक चीज़ देख रहे हो, मेरे ऊपर एक बैज है। वैसे मैं नोटिस नहीं किया कि कौन से छात्र किस ग्रुप में है। वैसे समंथा किस ग्रुप में है, देखते हैं। ओह, इधर नहीं है भाई, चली गई। ये है क्या? नहीं, ये तो कुछ कोई और है। वो जा रही है, नीचे जा रही है। इधर ही तो जा रही थी, वो जा रही है। इसको देखते हैं, यही समानता है। हाँ, वैसे ये बैज है रेवेनक्लो। ऑलराइट, तो अभी चलते हैं सेकंड क्लास के लिए। तो शायद नीचे जाना है, बहुत नीचे। भाई ये क्या है? और इसको घुमा देते हैं। ये यूनिकॉर्न का स्केलेटन है क्या? क्या पता, यूनिकॉर्न या फिर राइनोसोरस हो सकता है। यहाँ पर फ्लेम है, वो ब्लू फ्लेम। अच्छा, तो इसको मैंने एक्टिवेट किया तो बाद में मैं शॉर्टकट करके आ सकता हूँ। और ये क्या है? सीसीटीवी है भाई, आंखें है। मुझे कैसे दिख रही है भाई? तो अंदर चलते हैं। Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
ओके गाइस, तो अब हम सीखने वाले हैं लेवियोसो। ऑलराइट, चीज़ों को उठाने के लिए ऊपर लेवियोसो। Levioso! Now, let's try something a little larger. ठीक है, तो अब हमें इसके ऊपर जादू करना है। ऑलराइट, Let us तो begin देखते हैं। with a basic cast. पहले नॉर्मल करना है। ऑलराइट, बेसिक कास्ट यूज करते हैं। See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, तो ये इसको a प्रोटेक्ट कर रही surprised है, opponent तो is हमें a पहले weak लेवियोसो opponent. करना है, उसके बाद बेसिक कास्ट यूज करना है। ये करना है भाई। Well done. अबे मर जा। Well done. Very good. बढ़िया। But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, ओह, I सेबेस्टियन want सेलो के fair साथ फाइट करना है। Levioso, वो basic cast, and भाई, इन Protego. लोगों ने जादू You की may मदद से begin. कुछ भी बना देता है। अब कंपटीशन होगी। इसको तो मैं मार ही डालूंगा। Protego! Protego? ये पहले Complicates प्रोटेगे यूज कर दे। Levioso! I know. Lucky. Nothing lucky about it. भाई, ये जो बंदा है ना, टोंट कर रहा है मेरे को। Let's just say I'm a मतलब quick कुछ बोल learner. रहा है। All of my students क्या are समझता है अपने आप को? I do enjoy enlightening. Watch your opponent for signs to attack. मैं टोंट कर रहा था मेरे को। Not bad for a beginner. You give as good as you get. भाई, मुझे लग रहा है ये मैलफॉय है। लगता है इसके साथ बनेगी नहीं। I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. भाई, इसके साथ तो बनेगी नहीं भाई। ये देखो, ये है नाग शक्ति से, मतलब सितरिन से। In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. भाई, फिर से टोंट कर रहा है। पाक का ये मैलफॉय है, जैसे मूवीज में था वैसे। School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon.
perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. भाई बोल रहा है कि रूल्स If तोड़ना you're है, interested. मतलब लाइब्रेरी जाकर जो निश्चित Till बुक next time. किताब पढ़नी है ये सब बता रहा है। पहले बोल रहा था कि तुम लाकीली जीत गए, स्किल मैटर करता है वगैरह वगैरह। भाई क्या ही बता, बदमाश कहीं के। ओह हेलो, कैसी है? Sebastian, he's strong competition. Well done. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. तो अभी हमें जाना है न्यू क्वेस्ट अवेलेबल, शायद विजली के साथ बात करना है, प्रोफेसर विजली। I'm not और much ये for क्या कर रहा है dueling. इधर? I prefer to keep things friendly. और ये जो देखो मैप के अंदर कुछ है, कुछ ट्रेजर बॉक्स है, किधर इधर तो किधर है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे नीचे है कि ऊपर है? तो न्यू क्वेस्ट अवेलेबल है तो देख लेते हैं मैप के अंदर किधर है। तो विजली आफ्टर क्लास, तो विजली के साथ मीट करना है। और राइट, शायद डायरेक्शन बन गई है। यस, तो अभी चलते हैं। और मैप में कुछ ट्रेजर बॉक्स तो दिखा रहा है, लेकिन किधर है भाई? इधर तो नहीं है, ऊपर है क्या? क्या पता। और राइट, तो चलते हैं। उधर क्या है देख लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कुछ नहीं है। ट्रांसफिगरेशन कोर्टयार्ड, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ टेलीपोर्ट होकर, मतलब स्पीड ट्रेवल करके। बिल्ली है। राइट। What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? भाई ये जानना चाहते कि ट्रैवल में क्या हुआ था, मतलब और क्या क्या चीज़ें मेरे को मिली। Hasn't Professor Fig said anything? No, Have you and Professor. Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. मतलब ये जो मैडम है जानना चाहते हैं सब कुछ, I'm not sure I have लेकिन time for हम extra कुछ नहीं assignments, बताएंगे। Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. What more can you tell me about the potion shop? What's spellcraft?
Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. भाई नैटी ठीक है लेकिन सेबास्टियन बदमाश है भाई. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. तो अभी हमें रेनॉन के साथ मिलना है. कुछ उन्होंने बना है मेरे लिए तो वो देखना है. और अच्छा प्रोफेसर रिपेरियो सिखाएंगे. यस तो चलो अभी चलते हैं. और प्रोफेसर विजली जो बताया था एक तो पोषण शॉप में जाकर पोषण जो तैयार करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो लेना है. उसके बाद स्पेल कप के बारे में कुछ बताया कि हम किसी के ऊपर अगर जादू करते हैं उसके लिए हमें सीखना है. और यहाँ पर रेनॉन क्या कर रहा देखते हैं. Teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. ऑलराइट अब हमें रिपेयरो सीखना है. हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि रिपेयर करना है इसको. I wonder where the flying page is. तो ये जो पेज उड़ रहा है इसको पकड़ना है. मैं कैसे पकड़ूं? अच्छा अभी तो सीखा था ना. लेविओसो कर सकते हैं. लेविओसो यस ये तो इजी है. और एक पन्ना किधर है भाई? इसके ऊपर क्या उड़ रहा है भाई? नहीं ये नहीं है. और एक पन्ना. अच्छा अंदर है क्या? हाँ तो इधर से जाना है क्या? नहीं इधर से नहीं. तो और एक पेज शायद इधर से जाना है. अच्छा यहाँ पर ही दरवाजा है भाई. A flying page must be around here somewhere. देखते हैं. ये है. इसको पकड़ना है. इसके ऊपर लेविओसो करते हैं. ये हो गया. अब हमें जाना है रेनॉन के पास.
रिटर्न टू प्रोफेसर रेनॉन। और राइट, ये क्या कर रहा है? क्या जादू कर रहा था भाई? फिर से बंद कर दिया भाई। कुछ कर रहा था छड़ी लेकर। I trust the All right, preliminary hello, tasks Professor. weren't too... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember. So finally हम सीखने वाले हैं रिपेयरो। तो करते हैं। तो इसी को मैं सीखना चाहता था जब मैं प्रोफेसर फिग के साथ था। तो उन्होंने ब्रिज रिपेयर किया था, तो हमें तो सिखाया नहीं, लेकिन अब मैं सीख चुका हूँ रिपेयरो। तो कुछ भी हम रिपेयर कर सकते हैं। That's it. Very good. All right. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. तो अब हम इसके ऊपर प्रयोग करते हैं, देखते हैं रिपेयर होते हैं कि नहीं। Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? तो हम रिपेयरो सीख चुके हैं और अभी भी 4 स्पेल सीख चुके हैं। जैसे रिपेयरो, ये हो गया लूमस, और यहाँ पर है एक्यो, लेवियोसो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसी हुई ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Lumos.